Hello students, this is our second part of exercise 5E, chapter number 5, complex number of 11th class. So we are given here a question here, find real number x and y if the product of these two complex numbers is conjugate of the third complex number. First of all, let us try to understand what is conjugate of a complex number. If z is any complex number x plus iota y, we are to find the conjugate of this number. We'll apply bar on this. It means we'll change the sign of term iota, or we can extend one term like real parts will remain same, but the term iota will change its sign. So this is the conjugate of z. Let us take another example. If a plus iota b, then bar means conjugate. This will become a minus iota b. If it is given z is equal to c minus iota d, then z bar will become c plus iota d. So whenever we find conjugate, we'll change the sign of iota only. So let us start the solution of the given sum. According to the question, product of these two complex numbers is equal to conjugate of the third number. We'll take bar on the third number. Let us multiply the left hand side. We'll get 3x, 5x into iota, 3y into iota, 5y iota square. On the right hand side, if we find the conjugate of this number, we'll take positive sign with iota because negative is already there. So this is the conjugate of the above number. So let us separate the real. This will become real because iota square equals to -1. So this will become negative is already here. So it will become positive because of this -1 into minus positive 5y. This becomes real part. तो इस तो बाद ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ imaginary part ਨੂੰ separate. We got this iota common. On the right side we are left with the same number. ਹੁਣ comparing real and imaginary parts, we get ਇੱਥੇ real part equals to -6 and imaginary part equals to imaginary part, that is 24. Now we'll have to solve these linear pair of equations simultaneously. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ x ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਮ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ y ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ. ਲੈਟ ਅਸ ਮੇਕ the coefficients of y equal 5 multiply 3 multiply 5. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ 9x 15y 18 25x 15y 120. साइन क्योंकि पहला ही डिफरेंट ने इक्वल कोफिशिएंट्स दे, नो नीड टू चेंज द साइन. 34x equals to 102. x is equal to 102 divided by 34. x will become 3. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3. ਨਾਓ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ y, ਹੁਣ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ we have -6, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ. we'll get 9 plus 5y is equal to -6, and then 5y is -15 and y will be -15 by 5 is equal to minus of 3. So we got the value of real parts
x is equals to 3 and y is equal to -3 is the result which were required. The next question here is find the reciprocal of this number. So ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ reciprocal ਦਾ ਮਤਲਬ reciprocal of z is 1/z, मतलब जो संख्या ऊपर है वो बटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ we are given here a complex number reciprocal of iota minus 5 is equal to 1/iota minus 5। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਇਟਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। we got a minus b, a plus b in the denominator, a square minus b square, iota square will become -1, 5 square 25। we get ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਨੀਚੇ 26 because iota square is equal to -1, so the real part will be -5/26 प्लस, क्योंकि नीचे माइनस है तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगियां। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। in this question we'll have to prove this real part of any complex number z is equal to complex number plus its conjugate divided by 2 and imaginary part of that complex number z is equal to z minus its conjugate divided by 2 iota. Let us try to prove this. Proof: let z be any complex number, so z bar will become iota ਦਾ साइन चेंज हो जाएगा, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ z plus z bar by 2, we get z ਦੀ ਵੈਲਿਊ plus z bar ਦੀ ਵੈਲਿਊ divided by 2। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਂਸਲਡ, we are left with x ਤੇ x ਕੀ ਹੈ? this is real part of given complex number. Now second part, we'll take x plus iota y first term minus conjugate ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ divided by 2 iota, we get x ब्रैकेट्स ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ x ਕੈਂਸਲ, 2 iota y ਬਚਿਆ, ਨੀਚੇ 2 iota, 2 iota ਨਾਲ 2 iota ਕੈਂਸਲ, ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ y ਤੇ y ਕੀ ਹੈ? ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਹੈਂਸ proved। आओ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ x plus iota y ਕੋਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ that is equal to the fraction of two complex numbers a plus iota b and a minus iota b, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ x square plus y square is equal to 1। तो आओ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ। proof: x plus iota y is given ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਟਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਲ ਗੈਟ a plus b ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਦੀ। ਨੀਚਲੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ a minus b a plus b that is a square minus b square। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ a square plus 2ab plus b square divided by
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जेकर इनू सिंपलीफाई करिए बिकॉज आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 है, जिथे भी आइटा स्क्वायर है उत्थे -1, ए पॉजिटिव -1 विल बिकम नैगेटिव, रियल पार्ट बन गया। 2ab आइटा जिहड़ा है ये इमेजनरी पार्ट, दिस इज़ रियल, आइटा स्क्वायर -1 होने करके दिस इज़ रियल। तो नीचे ए स्क्वायर आइटा स्क्वायर विल बिकम -1, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। जेकर रियल ते इमेजनरी पार्ट्स नू सैपरेट किया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन नू हुण करन दे दो मैथड ने, या तो असी स्क्वेयरिंग करके इसनू हल कर सकते हाँ, दूजा तरीका साडे कोल है, लेट अस टेक द कंजुगेट ऑफ दिस। सो कंजुगेट ऑफ दिस इज कंजुगेट ऑफ द होल प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका पूरे का कंजुगेट, तो इसका साइन आइटा का चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड इस आइटा का साइन चेंज हो जाएगा। जेकर इस इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 2 नू असी मल्टीप्लाई कर दिए, multiplying equation 1 and 2 we get x plus iota y x minus iota y, a square minus b square divided by a square plus b square plus 2ab iota divided by a square plus b square। Similarly ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इत्थे माइनस है दूजी इक्वेशन दे विच, 2ab आइटा डिवाइडेड बाय, जेकर असी देखिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इत्थे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइटा स्क्वायर इत्थे बिकम पॉजिटिव। तो इत्थे जेकर असी न्यूमीनेटर नू एज इट इज़ रहन दीए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो उपर साडे कोल टर्म बनी a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, तो इत्थों मिलिया सानू आइटा स्क्वायर विल बिकम पॉजिटिव, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। जब असी इनू सिंपलीफाई करांगे a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जेकर असी इसनू ध्यान नाल देखिए तो न्यूमीनेटर इज ए पार्ट इज ए कंप्लीट स्क्वायर ऑफ दिस, denominator will cancel this, become RHS. Hence we have proved that what was required, x square plus y square on the left hand side is equal to 1 on the right hand side. So with this we have completed our exercise 5e. So if you students have any problem, you can give me your problems in my message box. Thank you.